Assalamu alaikum students. This is Noreen Tabassum and hope so all of you are safe and sound by the grace of Allah Almighty. Time to study English. Open your textbooks and be attentive. As you know, in our last paragraph number 6 and 7, we discussed about the mission of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in paragraph number 6. The mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance, and disbelief, and to set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. In number 7, we saw on one occasion the pagan Arabs sent a delegation to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's kind and caring uncle Abu Talib, and in answer of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, he replied, "My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt." These were very authentic words, you know. So today let's move towards the paragraph number 8, 9 and 10. Paragraph number 8. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination and that he replied, "Son of my brother, go thy way. None will dare touch thee. I shall never forsake thee." The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने नेफ्यू अपने भतीजे के डिटर्मिनेशन पुख्ता अज़म से इतने इम्प्रेस्ड हुए, इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने ही रिप्लाइड आंसर किया, "सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, तुम अपने रास्ते चलो, नन विल डियर टच दी, कोई तुमको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा, आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं आपको कभी अकेला तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा." क्लियर? In paragraph number 9, and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for mankind, imbued with divine guidance and firm resolve. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also a divine force behind Arabs' conquests, which have created an everlasting impression on human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In fact, as the divine force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. Going to translate into Urdu. And the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते पर चले, go the way Allah Almighty had chosen, जिसे अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए चुना था, इंतखाब किया था. Imbued with divine guidance and firm resolve, अल्लाह ताला की रहनुमाई से फैज़याब होते हुए, imbued फैज़याब होते हुए with divine guidance and firm resolve, अल्लाह ताला की रहनुमाई से होते हुए, फैज़याब होते हुए एंड फार्म रिजॉल्व और पुख्ता अज़म के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजेस यानी कि ख़तरात का ग्रेस एंड डिग्निटी, इज़्ज़त और वक़ार से मुकाबला किया, फेस किया.
In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. इन नो टाइम जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में मुमकिना बुलंद सतह पर पहुंचा दिया. नेक्स्ट, he was also a divine force behind the Arab conquest which have created a everlasting impression on human history. No wonder he universally acknowledged the most influential figure of history in the world of Michael Hart, a great historian. What did he say? आप अरब फतूहात के पीछे भी एक मुहर्रक क़ुव्वत थे जिन्होंने इंसानी तारीख पर एक एवरलास्टिंग लाजवाल तासुर छोड़ा है. ये कोई हैरत की बात नहीं कि आपको पूरी दुनिया में तारीख में सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन शख्सियत तस्लीम किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है. अगर हम देखें तो एक अजीम तारीखदान माइकल हार्ट के अल्फाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. मज़हब इस्लाम और इसके बड़े बड़े इखलाकी और किरदारी असूल दोनों ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से थे. इन एडिशन इसके अलावाजी ही प्लेड a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. इसके अलावा आपने नए अक़ीदे के प्रचार और मजहबी तरीक़ेकार के क़याम के लिए एक की रोल जो है एक बुनियादी किरदार अदा किया.